Good afternoon, class 8 students. This is your science teacher Agrima Rawat. Hope everybody is doing well. And I think everybody have seen the previous videos. Now we are going to continue with the chapter. That was our chapter Microorganism, Friend and Foe. We have been talking about the friends. Then we have talked about foe microorganisms also. Now we are going to talk about what happened if some foe microorganisms are going to interrupt in our foods, right? So what is going to be happening then? Food poisoning is going to happen. Okay, so food gets spoiled when it is attacked by microorganism, and spoiled food gives off smell and taste bad. So what will happen then if the food has been attacked by some microorganism, कोई microorganism आपके खाने में अटैक कर चुका है, now it is going to produce a particular type of bad smell, foul smell मतलब गंदी smell आएगी, और खाने में टेस्ट में भी वो खराब टेस्ट कर सकता है आपको, right? And it is going, if you are going to eat that food, that spoiled food, you are going to get ill, and you get that particular process or condition will be called as food poisoning. Okay, now how we can prevent this, how we can not get this the spoiling of food. Okay, so for that we can have food preservation. Food preservation is a type of process in which the food can be preserved from spoiling by the attack of microorganism, obviously. So this is the technique. Now which kind of food are going to be preserved by which method? We are going to talk about this in this video. So there are different methods for different types of foods. First type of method is dehydration. We can understand this term first. Hydration means it is related to water. Okay, dehydration means take out the water. So if the moisture content of any food is going to be reduced, or we can say that food has been dried, so that food it can be preserved for a longer duration, because the microorganism attack a food when it is having a particular amount of moisture in it. नमी होती है उस खाने में, तब उस पे एक्चुअल में वही एक अच्छा इन्वायरमेंट है माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए. इफ दैट फूड इज ड्राइड अप, नाउ नो माइक्रोऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू अटैक इट. So you would have seen at home also methi leaves. Our mother used to dry it under the sun. Spices, मिर्ची वगैरह सुखाते हैं, धनिया वगैरह सुखाते हैं. So why it is doing, they are doing so to preserve it. Okay, and cauliflower, meat, fishes, they are heat and smoked. Means meat and fishes, because they are some non-vegetarian stuff, they has to be heated, and by the smoke they are preserved or dehydrated. Then the second method is freezing. If we will freeze some food items, then what will happen? The microorganism that can attack these food items, their growth will be stopped, because at a particular temperature many microorganism cannot survive. एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कोई भी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि नहीं सर्वाइव कर सकते. तो फ्रीज्ड फूड आइटम्स आपके प्रिजर्व्ड रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. Then the next method is pasteurization. Pasteurization is a method by which milk, most of the packaged milk, that is pasteurized. Okay, so it is a little bit different from boiling that we do at our home. How it is different? Because in this, the milk, or you can say other stuffs like juices, beer bottles, wine, they are pasteurized. So what is happening in this? These food items are being boiled at 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds. Okay,
70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds only, and then it is cooled quickly. Because of this sudden change in the temperature, the microorganism present in that milk or juice or beer or wine, they get killed, and no further growth of that microorganism will be happening there. So in the picture you can see it here that this is a machine. It is a machine that is used for pasteurization in big factories, big milk production companies. Okay, and you can see it here that these are the juice bottles. These have been preserved. Okay, so this is a process of pasteurization. It is different from boiling because it is at a particular temperature and for a particular very small timing, and then suddenly it is that particular thing has been cooled. तो पहले उसे बॉईल करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स में, और उसके बाद उसे बिल्कुल एकदम से ठंडा कर देंगे. तो इस टेम्परेचर का एकदम से वेरिएशन आया, एकदम से गर्म हुआ फिर एकदम से ठंडा हो गया, जिसकी वजह से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज these are the method that we see at our home also. Adding salt and sugar. So in salt adding and sugar adding, you would have seen your mothers making pickles. अचार बनाते हुए देखा होगा. सो इन दैट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज बीन एडेड. बहुत कम अमाउंट में नहीं डालते सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में ही डलता है उसमें. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सॉल्ट, व्हाट डज सॉल्ट रोल इन दिस प्रिजर्वेशन इज, जब उस अचार में या पिकल जब आप डाल रहे हैं तो उस टाइम पे जब आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी पानी होता है, सॉल्ट क्योंकि बाहर के कंडीशन में कैसा कंडीशन डाल रहा है, हाइपरटोनिक्स, राइट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना दिया उसने माइक्रोऑर्गेनिज्म के बाहर, और माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा पानी इन कंपेरिजन, तो उसके अंदर का माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाता है. ठीक है, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड है. तो जो उनके अंदर का पानी है वो बाहर आ जाता है, तो पानी की कमी की वजह से तो सेल मर जाएगी. तो इसकी वजह से अचार वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा नमक या शुगर वगैरह डाला जाता है. मुरब्बा वगैरह आपने देखा होगा उसमें शुगर डलती है, चाशनी के उसमें डालते हैं उसे. वो भी आप उस मुरब्बे को भी बहुत लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें शुगर एडेड है, तो वो आपके किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को वहाँ ग्रोथ होने नहीं देगा. Okay, so by adding salt and sugar can preserve your these things, pickle, meat, jam, sauce. Then you can add oil and vinegar also in pickling. अचार डालते हुए आपने देखा होगा that other than salt, the oil is also added in the pickle, right? बहुत अमाउंट में ऑयल भी डलता है अचार डालते वक्त. तो ऑयल इज ऑल्सो अ एनवायरमेंट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. जब ऑयल का जो इतना ज़्यादा ऑयल का कंडीशन जहाँ पे एनवायरमेंट होता है, उस कंडीशन में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आपके ग्रो नहीं कर सकते. तो इसलिए वो एक ऐसा एनवायरमेंट दे रहा है पहले से ही ऑयल अचार को, ताकि वहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ही ना करें. हाँ, आपने ये भी सुना होगा अपनी मदर्स वगैरह को कहते हुए कि उसमें पानी वाला चम्मच नहीं लगाना अचार में. वाई? बिकॉज अगर आपने पानी उसमें डाल दिया तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इजीली अटैक कर सकते हैं उसमें उस पानी के थ्रू, राइट? सो दैट इज व्हाट द ऑयल डज. विनेगर ऑल्सो प्रोवाइड सच थिंग. इन मेनी फॉरेन कंट्रीज द ऑयल पिकल आर नॉट दैट मच फेमस. वहाँ पे विनेगर में डाल के पिकल बनाया जाता है. सो वो विनेगर भी एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकते. Okay, so by adding oil and vinegar, you can also preserve vegetables, fish, fruits, fish, meat, etc. Now, next is you would have seen your preserved food bottles like these jam, sauce bottles. In this, all this you can store it for a very long time. Why? Because they have some preservatives. You can say chemicals. ठीक है, chemicals are present in these so that they can stay long for a longer time. Okay, citric acid, sodium benzoate, potassium metasulfide, these are few chemicals that are used as preservative in the food industry.
jam, squash, sauce, these contain these type of chemical. That's why many people suggest that we should not be eating that much of preserved food, because they are having these preservatives, these chemicals. Okay, the last method through which we can preserve our food is canning. Canning, as the word say, it is related to something can. ओके, ये कैन है, एक डब्बा है, एक कैन है, ठीक है. तो व्हाट इट इज डन, द फूड आइटम इज बीन एडेड टू इट, इट इज इन हेयर, एंड दिस कैन इज बीन सील्ड. इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि इसमें कुछ अंदर घुस ना पाए. उसके बाद इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इस कैन को हीट किया जाएगा. ओके, why it is being heated at so high temperature? So that the microorganism present in it get killed. Okay, so and these cans are airtight, so that no air can enter. With air no microorganism can also enter. Okay, so it can be preserved for a longer duration, right? So canning is one of the very much used method. Okay, so these are all the preservation techniques that our food industry and at our household it is used. Okay, I think everybody is clear about it. Okay, thank you.